Myself, BL Deepan, HOD Electronics, Government Polytechnic College, Jodhpur. Second year Electronics and Electronics Fiber branch के सब्जेक्ट EDC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की यूनिट 1 के टॉपिक बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के रिमेनिंग पार्ट 2 को आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस किया था। टुडे वी विल टेक reverse biasing of the PN junction diode. The process by which a PN junction diode blocks the electric current flowing through it in the presence of applied voltage is called reverse biasing of the PN junction. In reverse biased PN junction diode, the positive terminal of the battery is connected to the N-type semiconductor material and the negative terminal of the battery is connected to the P-type semiconductor material. यानी कि पीएन जंक्शन के P को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के से जोड़ेंगे, जबकि N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे. By doing so, holes from the P side are attracted towards the negative terminal, whereas free electrons from the N side are attracted towards the पॉजिटिव टर्मिनल. यानी कि P साइड के होल जो कि जंक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नॉट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. In reverse biased PN junction diode, the free electrons begin their journey at the negative terminal, whereas holes begin their journey at the positive terminal. Free electrons which begin their journey at the negative terminal find large number of holes at the P-type semiconductor and fill them with electrons. The atom which gains an extra electron becomes a charged, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, P साइड के पास में they will find a large number of holes and these holes are filled by the electrons. The atom which gain an extra electron, जो atoms जिन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, becomes a charged atom or negative ion. These negative ions at PN junction, P side में जो negative ions है, these negative ions at P junction, P side opposes the flow of free electron from N side. तो ये negative ions की जो लेयर है P side में, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेगी from N side to the P side. On the other hand, holes which begin their journey at the positive terminal find large number of electrons at the N-type semiconductor and replace the electron position with holes. The atom which loses an electron becomes a charged atom. जो electrons बाहर निकल रहे हैं एटम से, they will become charged atom और positive ion. These positive यानी कि N side में जो positive ions की जो layer है, that will become increased. These positive ions at PN junction N side opposes the flow of holes from P side. ये जो positive ions की जो layer है वो holes के flow को रोकेगी from P side to the N side. If the reverse biased voltage applied on the PN junction diode is further increased, then even more number of free electrons and holes are pulled away from the PN junction. तो जैसे जैसे reverse bias को increase करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट का और ज्यादा रोका जाएगा टुवर्ड्स जंक्शन. दिस increases the width of the depletion region. इससे रिवर्स बायस को इंक्रीज करने से डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी, hence the width of the depletion region increases with increase in voltage. यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेयर जो अनबायस्ड कंडीशन में कम थी, with the increase in reverse bias, with the increase in negative voltage, this layer is increases. यानी कि more
more atoms will become ions. P side में negative ions बढ़ेंगे, whereas in N side positive ion layer is increases. This wide depletion region of the PN junction diode completely blocks the majority charge carriers. Hence, majority charge carriers cannot carry the electric current. यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा. मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई भी करंट नहीं बनेगी. नो होल फ्रॉम पी साइड will become able to cross the junction. Similarly, एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि वहां मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, वो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके पी साइड की तरफ नहीं जा पाएंगे. In this case, PN junction diode allows the minority charge carrier. इस केस में रिवर्स बायस कंडीशन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन के अक्रॉस मूवमेंट कर सकते हैं. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी pushes the holes minority carriers towards the p type semiconductor. यानी कि n साइड के जो होल्स है वो p की तरफ मूव कर सकते हैं. एंड सिमिलरली जो n के जो इलेक्ट्रॉन p के जो इलेक्ट्रॉन्स है, they can move towards the n side by crossing the junction. In the similar way, negative terminal of the battery pushes the free electrons minority carriers towards the n type semiconductor. यानी कि minority carriers का मूवमेंट अब भी हो सकता है. They can cross the junction. The holes which cross the PN junction are attracted towards the negative terminal of the battery. On the other hand, free electron which cross the PN junction are attracted towards the positive terminal of the battery. Thus, the minority charge carriers carry the electric current in reverse biased PN junction diode. यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो भी करंट बनेगी, बहुत कम करंट बनेगी, बहुत माइन्यूट करंट बनेगी, of the order of microamperes in case of germanium diode and of the order of nanoamperes in case of silicon diode. तो ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट बन रही है, this current is carried by minority carriers only. The electric current carried by the minority charge carriers is very small. Hence, minority carrier current is considered as negligible. Thanks.